आसिन, आपका पहला सिन, आमिर का दिल चुराया। वेल मैं बहुत लकी हूँ कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ दी आमिर खान इन माई फर्स्ट हिंदी मूवी इटसेल्फ, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। ऐसा हुआ था कि आई डिड द तमिल वर्जन ऑफ गजनी, and the producers of this Gajni, they said that they were remaking it and they wanted me to play the same role. So for me it was very exciting क्योंकि it was a dream team to be working. लेकिन it is not monotonous or repetitive. Team अलग है. हिंदी गजनी में it's a total different team. Technically has come in also and actor wise also. तो therefore it was refreshing. चलिए, अच्छा ये बताइए कि आमिर खान सबसे कह रहे हैं कि मैंने तो आसिन को एक्ट करते हुए देख लिया, अब जब आप लोग देखेंगे तो आप भी उन पर लट्टू हो जाएंगे। Well, that's a very big compliment coming from Amir. Thank you, Amir, for that. It's been a pleasure working with him, and it really means a lot, whatever he said. आसिन, हमने ये भी सुना है कि आमिर जब फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे तो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है कि उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराया था आपके फर्स्ट शेड्यूल में, किस तरह से, हाउ यू गाइज ब्रोक द आइस? Oh, there was no major breaking the ice. I met him just before the shooting. He had called me to his place, him and Kiran, his wife. So I met them both and we had a script reading session. So that's when I had met him for the first time. It was very sweet and very encouraging. और उसके बाद आमिर जो आपको वॉक्स पे लेकर जाते थे सारी कहानी सुनाने के लिए। Rubbish! Seriously, I don't know where we get the time to go for walks and take a mini holiday and stuff like that. It's all rumors which I'm very new to. I don't know how to react to such stuff. But nothing of that sort happened. In fact, we went to Namibia, landed there, immediately we started shooting, as in we didn't even get time to... वहीं के लिए ये इस तरह की खबरें आई थी कि आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे, तो वहाँ पर आमिर ने कहा कि we had shot so many scenes together before itself, so song was much later. So there was, I don't know where these rumors come from, it's very weird for me. अभी बॉलीवुड में एंट्री की है। I'm just getting used to it. हो जाएगा। अच्छा, आखिरी जो हमने बात की थी इसमें वो थी एक ऐड को लेकर, जिसे लेके खबरें आ रही हैं कि आमिर ने जिस एक्ट्रेस के साथ वो ब्रांड एंडोर्स करते थे उनकी जगह अब आपको रेकमेंड किया है, तो अब आप वो ऐड कर रही हैं। नहीं, एक्चुअली दैट्स आल्सो अगेन अनदर फॉल्स रूमर। मैं टाटा स्काई, आई एम एंडोर्सिंग टाटा स्काई, आई साइंड इट मच अर्लियर। ऐसा हुआ था कि आई वाज शूटिंग फॉर लंडन ड्रीम्स, मेरी दूसरी हिंदी फिल्म इन लंडन, सो इट वाज अ लॉन्ग शेड्यूल. So they wanted to make an ad at that point of time, which I couldn't come and shoot for. Isliye they went ahead and shot. I mean, it was a temporary thing. They shot with somebody else, and then now the rumors start coming like, now I'm signed, and then I'm going to be replacing somebody else. But it's all again like to clear that that's not the truth. कोई मजेदार इंसिडेंट बताइए। मजेदार, he was too involved in his character and his new avatar to be concentrating on anything else. Usually I hear he's a prankster, लेकिन I've not experienced that side of him. He forgot only. हाँ, he forgot about playing pranks on me. क्या आप बहुत सीरियस थी इसलिए कुछ नहीं हुआ? नहीं, nothing of that sort. I think everybody was too involved in that work that he completely forgot about that aspect of his. In fact, जब हमने शूटिंग रैप किया तो then he remembered, like, अरे I forgot to play any tricks on you. Oh God, I missed the opportunity. So he was feeling very regretful. चलिए आसिन, आपने अपना पहला जो इल्जाम है आपके ऊपर उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि आसिन के ऊपर दूसरा और कितने सारे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। चलो।